This diagram which I am going to draw is a 1,000 crore diagram, 1,000 crore. Just write in your diary. देना ना देना होगा अलग बात. This diagram is called as soul of history, soul. You would have never seen this diagram, never. I have seen because my teacher has drawn, but you would have never seen. Agricultural economy in India and the condition of India. Agricultural economy in India and the condition of India. Post Maurya, Gahapati, rich farmers are present in India. State is the master. Prosperity is flowing in India. Rajput period, feudal lords. Farmers become the serf. End of the glory of Bharat. Sultanate. Serfs are liberated. Through whom? Iqtidars. Who are Iqtidars? Guardians. Guardians of farmers against feudal lords. Pre-Mughal period, Iqtidari develops feudal traits. Weak role of Firoz Shah Tughlaq and weak state.
against serfdom. Mughals, moksha for farmers, moksha, land revenue policy and Jagirdari system. Jagirdar becomes the father of farmers against feudal lords. British, serfs and slaves. Farmers are not only serfs, they are slaves also. Serfs and slaves. State is the devil. Independent India, neglection by the state. And state is weak. पूरा भारत एक जगह पे ऐसे बता दोगे ना इंटरव्यू बोर्ड में, कहा जाओ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, खत्म करो, तुम आईएएस से भी बहुत ऊपर की चीज हो जाओ. Picture is clear. You must be visualizing entire historical period in one go. ऐसे पढ़ना है हिस्ट्री ऐसे कि it should act you as a lamp in present situation. पूरी कहानी क्लियर हो. You should be a great policy maker. You are going to be a policy maker. तुम्हें पता है कि यहाँ क्या होता था फार्मरों के साथ. What Mauryans have did for the farmers. What Sher Shah Suri has done for the farmers. What Akbar has done for the farmers. And how their condition was. British period. Serf and slaves. Farmers become serf and slaves. Extreme critical condition. State is devil. State is devil. State is backing both. Rahu and Ketu. Mahajan, moneylender, Jamindar, all. So when India became independent, 400 crore was rural debt. 400 crore. Some idiots say that Nehru has done nothing. अब जब तुम मॉडर्न इंडिपेंडेंट इंडिया पढ़ोगे, नेहरू, गांधी एंड पोस्ट लिबरलाइजेशन, पूरा चार्ट बना लो. फ्रॉम इकोनॉमी, इकोनॉमी का चैप्टर खोलो, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, पूरा चार्ट बना लो, लिखो एस्से, राइट एस्से. इतना नंबर देगा ना तुमको. सोसाइटी ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, पॉलिटी ऑफ इंडिया, कल्चर ऑफ इंडिया, हर चीज ऐसे बनाओ ऐसे. आई विल गिव यू द ग्राफ. I'll give you the graph. पूरी stream clear, पूरी लिखो. They can give you the question from anywhere. Give the condition of farmers of ancient India. बताओ इसमें क्या रटना है. इसमें कुछ रटना है. पूरा 200 साल क्लियर. हजार साल की हिस्ट्री क्लियर. 1000 साल, 1000 years. अभी मेडिवल पीरियड का ग्राफ बनवा देंगे इकोनॉमी का पूरा. आफ्टर कंप्लीटिंग अकबर, I will complete economy of medieval India. बड़ी जबरदस्त इकोनॉमी, मजा आ जाएगा तुमको. I will complete economy of India, पूरा ग्राफ. The two pillars, agricultural economy and trade and commerce, the two pillars. I will give you the graph. Rajput period, then Sultanate, then pre-Mughals, then Mughals. Entire connectivity. कि क्या था, क्या हुआ, फिर what was the setback and how Mughals. I said ना, this graph is of 1000 crores, 1000, और इंडिपेंडेंट इंडिया का बना दूं तो 2000 करोड़. If I draw the independent India's graph, Nehru, British, Nehru, post liberalization, Modi. अरे बाप रे बाप, बवाल. गवर्नमेंट विल हायर यू इमीडिएटली. अरे भैया,
I have given a project of education on India to Indian government, possibly within next 2 months. Officers are asking me to explain it. इसको यार हमें भी बताओ यार. और ये सब नतीजा किसका है? ध्यान का. सुबह देखो. Now here zamindars were mainly Hindus. So these people portray it as a struggle between Hindu and Muslim. ध्यान करो, ध्यान. पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी. क्या करोगे पढ़ के? अब भूलेगा? नाउ फ्यूडल लॉर्ड, जमींदार, इक्तादार, जागीरदार. All the terms are clear? The day you will go and write answers like this, na? Zamindar is a tehsildar. Feudal lord is a king. Iqtidar is a guardian. Jagirdar is father. Guardian of feudal lord. These two are basically to handle this feudal lord. King, feudal lord. Iqtidar, SDM. Jagirdar, DM. Feudal lord, Akhandanand Tripathi. Unconstitutionally powerful. The lowest unit, lowest. And they all survive on, they all survive on land grant. बस यहीं पे आदमी को दिक्कत होती है. They all survive on land grant. But they all are different. Today, all the terms are used as a common word. तभी तो मैं तुमसे कहता हूं बस 3 जगह अपनी जिंदगी को ले जाओ. This world will run behind you. Temple, library, gym. No one in this world will ever leave you. Ever. No one. No one will ever leave you. You develop your relation with these 3 people. Mental, spiritual and physical power. Now, Jagirdari. Under a unique creation of Akbar. Which became very helpful for Akbar and Mughal Empire. Which became very useful for Akbar and Mughal Empire.
Jahangir maintained it, but the man who created the trouble, Shah Jahan, he is the man who creates the trouble. Shah Jahan he creates financial crisis in Mughal Empire. How he creates continuous wars, from Central Asia, this Central Asia to Deccan. Continuous wars from Central Asia. War against Nazar Muhammad, Balkh region, to taking away of Ahmednagar. He is the man who takes away the Deccani state Ahmednagar. There were three prominent states, na? Ahmednagar, Bijapur, Golconda. He takes away Ahmednagar. And that was a message, clear, crystal clear message to the Deccani states, you know, you cannot rely on Mughals. Continuous wars, constructions, nothing to say about it. Taj Mahal, Itimaduddaula's tomb, constructions. And then a European gives the information, Peter Mundi. Peter Mundi gives the information that his period suffered from famine. His period suffered from famine, possibly failure of monsoon, drought. Now when he became the victim of financial crisis, what he did, Shah Jahan, what he did, increased in Khalisa land. अब ये एक नया बवाल यार, खालिसा. इंक्रीज इन खालिसा लैंड. खालिसा, खालिस मतलब प्योर, खालसा, खालिस्तान, द लैंड ऑफ प्योर पीपल. Pakistan, the land of pure people. Hindustan, the land of pure people. Jahils. गुटखा खा खा के यूपी का लौंडा मरा हुआ. गुटखा. He cannot sit silently for 10 minutes without gutka. You can imagine the mind, the status of the mind of the youth of UP, Bihar, and majority part of this country. You go to Kashmir, every youth will have a cigarette in hand. Every youth. You go to Gujarat, you'll find every youth chewing. You know, when you are chewing, so your mind gets relaxed. A Hindi medium student called me from Allahabad, and he said, sir, I also want to join your optional batch, sir. I will understand English, but you have to give me Hindi medium notes. मैंने कहा बेटा कमिटमेंट कोई नहीं. कमिटमेंट तो अपनी बीवी से नहीं किया मैंने. कमिटमेंट जिंदगी में किसी से कोई नहीं है. कर दें तो एहसान मान लेना, ना करें तो गाली दे देना. क्या करें, वो तुम्हारे हाथ में.
कर दें तो एहसान, ना करें तो गाली दे देना, अरे यार मॉडर्न इंडिया पढ़ाए नहीं, इतना पढ़ा दिए कम है, तरीका बता दिए। अब जवानी में सेक्स की काउंसलिंग की जाती है। A girl and a guy gets married, they want to know about sex, so they went to a sexologist and he gives the counseling. करके नहीं दिखा सकता, उससे कहते बच्चा भी पैदा करके दिखा दो, तो वो नहीं होता बेटा, वो एक अलग कहानी है। ये नहीं पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा है, ये अबे कितना पढ़ोगे, कितना, लेकिन पढ़ाएंगे हम तुम्हें, हर चीज पढ़ाएंगे, हर चीज, एवरीथिंग। सीखो, इवॉल्व करो। This world, cut off yourself, be you know what is the real meaning of saint? Do you know the meaning of real meaning of saint? Saint is one who simply watches and enjoys. One who watches, stands in this world and watches. You are an IAS officer. People come towards you कि भैया, you are a incarnation, भैया, you are the light of this house, भैया, and you are watching कि no, 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 no. This man is not praising me. You are watching. You have maintained a distance. Harshita and her conscious. Harshita becomes CM of Haryana. And then the people of your relatives, your family, your friends, they come and start singing bhajan. बिटिया हो तो हर्षिता जैसी हो। देवी है, दुर्गा का अवतार है, and this conscious of हर्षिता is watching it. ये अले हमें थोड़ी कुछ कह रहे हैं, ये तो इसको कह रहे हैं। Harshita fails to do anything in this world. She fails to do anything in this world. And the same people start abusing her. दिल्ली में रह के लड़कों के साथ घूमती थी, हम जानते नहीं क्या, दारू पीती थी, है पढ़ाई किया इसने। अगेन द कॉन्शियस इज वॉचिंग, ये साले इसको गाली दे रहे हैं, एंड एंजॉइंग बोथ द थिंग्स। समाधि, this is called as samadhi. You segregate yourself, your conscious sees, watches and enjoys कि ना कोई मुझे मेरी तारीफ कर रहा है, इसका फायदा हो रहा है, इसको मजा आ रहा है। अभी मैं 10 दिन की क्लास बंद कर दूं, अभी तुम ही मुझे गाली देने लगोगे। अभी मैं 15 दिन गायब हो जाऊं बैग पैक करके और कोई इंफॉर्मेशन ना दूं, अभी इसी क्लास में से लोग मुझे गाली देने लगेंगे। अरे हम पहले जानते थे, गुड्डू भैया बताए थे कि इस पे भरोसा मत करना, ही भाग जाएगा। अभी अभी नो वन,
no one from this class, no one from this class, no one from this class will say कि नहीं सर, इतना पढ़ा दिए थे, बहुत पढ़ा दिए थे, we are indebted, finish. और तुम दुखी होते हो. ये बात आज की 1000 करोड़ की, फ्री में ले जाओ. गाना है ना, अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न तुम समझ सके न हम. Why you are watching movies, serials? This life is a movie. This life is a serial. This life is full of drama. And when you will come in this status, when you will start playing this is called as meditation, beta. This is called as meditation. This is meditation. देखना. क्या? क्या देखना? Meditation means देखना. क्या? आदत बेटा, habit. One of the very important feature of mind is habit. Meditation is to break the habit. The main objective of meditation is to break the habit. This is called as meditation. The main objective of meditation is to break the habit. When you will start playing this, your entire energy will be involved where? In your goal. Your entire energy will be involved in your goal. Jago babu, jago. Why you are getting involved in this drama? What is meditation? To watch the drama. What is meditation? To watch the drama. तुम नाहक में क्यों परेशान होते हो यार? संत मतलब ये, one who watches and not simply watches, enjoys. मजा भी लेता है वो, दोनों का, पॉजिटिव का भी, नेगेटिव का भी, दोनों का. चलो दिलदार चले चांद के पार चले, हम हैं तैयार चले. जब तुम किसी को नींद से जगाते हो तो क्या कहता है? 5 मिनट 5 मिनट आ रहे हैं. कभी कभी गाली देता है, मेरे बच्चे सो रहे हैं, इफ आई गो एंड से टू देम, बेटा उठो, अभी गाली देने लगेंगे. पापा तुम तो यार सोते नहीं हो. माय डॉटर सेड कि यार तुमको सोते हुए नहीं देखते हैं, क्या करते हो? मैंने कहा ध्यान. अरे बोला जब देखो तब ध्यान बोल देते हो. पापा तुम, बच्चे हैं ना, अभी उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे. कबीर, यू लिसन टू कबीर. तुलसी इज वेरी लिबरल ऑन माइंड. जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी. बट कबीर इज वेरी मच एंग्री ऑन माइंड. कबीर इज वेरी मच, इफ यू लिसन टू कबीर, व्हाट ही सेज टू माइंड कि तू है रंडी फिरे भिहंडी. कबीर इज अ मैन हु कॉल्स mind as prostitute. You can imagine his anger on mind, because mind will try to pull you back. जैसे मुजम्मिल कल सो गया, मन गई तो चक्कर में सोया. समझना है. Come back to the main point. Shahjahan creates financial crisis. Connection. Continuous wars, Central Asia to Deccan, constructions, famine. Because of this financial crisis, what he did? Now see, connect the two things. He is facing financial crisis, and because of that, what he is doing? To overcome the financial crisis, he is increasing Khalisa land. To overcome financial crisis, लिख लो यार, he increases
Khalisa land. So if in entire Bharat, Mughal Empire, sorry, if in entire Mughal Empire there is 100 acre of land, if in entire Mughal Empire there is 100 acre of land, 10 acre is a Khalisa land. 10 acre is a Khalisa land, means the land whose income, listen, the land whose income is for the crown. राजा भी तो सैलरी लेगा. 90 acre, 90 acre जागीरदारी. जागीरदारी. Here you miss. यहीं पे तुम मिस कर जाते हो. Now what Shahjahan did? He is facing financial crisis. Shahjahan, Mughal Empire has increased, territorial expansion, number of Jagirdars have increased. Shahjahan, Mughal Empire has expanded. Number of Jagirdars have increased. Number of Jagirdars have increased. And all the land is not of equal status. All the land is not of equal status. Oh. Some are highly fertile, some are less fertile. What he did, Shahjahan, from 10 acre, he turned into 20 acre. Here, 80 acre. In this scenario, when number of Jagirdars have increased, connect, entire diagram connect, and you will understand Jagirdari crisis. Ek anar so bimar. Here it starts. What Aurangzeb did? 50 acre. He again increases Khalisa land. He is in deep financial crisis. Shahjahan was in financial crisis. Aurangzeb was in deep financial crisis. Revolt in entire Mughal Empire. Deccan crisis. Here only 50 acre. औरंगजेब समझ नहीं पाया क्या करता. कनेक्ट करो, कनेक्ट ऑल द थिंग्स. मजा आया? क्लियर? हिस्ट्री इज लाइक मैथ्स. तो फाइनेंशियल क्राइसिस, आई एम गोइंग टू गिव यू अ डायग्राम. 1000 करोड़ आज का आज ही 3-4 हजार करोड़ हो गया तुम लोग के ऊपर. औरंगजेब
Financial crisis increases. Why? Revolts in different parts of Mughal Empire. Deccan crisis. What he did? 50-50. All Mansabdars did not have the land, but all Jagirdars had the land. Shahjahan dig the well. Financial crisis. Aurangzeb that turned that well into a pond. And Bahadur Shah I, after coming into power, distributed all the wealth to satisfy the turbulent Jagirdar and Jamidar appeasement policy. And he turned this pond into this lake. Financial crisis. Bankruptcy. Here financial crisis. Here increase in financial crisis. Here financial bankruptcy. State is bankrupt. And Mughal Empire drowned in this lake. Emergence of kingmakers. Finish. तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं तो मजा जीने का और भी आता है. दिन में खोली रात पीली बत्ती में गुजार दी और थोड़ी सी चढ़ी तो नीली बत्ती ने उतार दी. दिन में खोली रात पीली बत्ती में गुजार दी. स्लीपिंग ऑन द स्ट्रीट. सत्या देखी उसका गाना है गोली मार भेजे पे. लाइन देखो लाइन. दिन में खोली मतलब डे इज ऑल्सो इन ट्रबल. रात पीली बत्ती. Night is also in trouble. और थोड़ी सी चढ़ी. If to overcome that trouble, I took the liquor. थोड़ी सी चढ़ी तो नीली बत्ती ने उतार दी. मामा कल्लू मामा. इस अंजुमन में आपको आना है बार बार. जागीरदार से in trouble, revolt increases. जाट रिवोल्ट, बुलदेला रिवोल्ट. कोई हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं था. There was no issue of Hindu and Musliman. There was nothing called Hindu and Muslim. पैसे का मामला था. पैसे का मसला पैसे का था. जाट रिवोल्ट, बुंदेला रिवोल्ट कि नहीं देंगे पैसा. उसको पोर्ट्रे कैसे किया जाता है? हाउ इट इज पोर्ट्रेट. अरे औरंगजेब वाज. कोई हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं था. था ही नहीं. औरंगजेब वो समझ नहीं पाया. गुस्से में था कि why these people are revolting. He was a man of a low temperament. He was a man of a low temperament. उसको गुस्सा आ जाती थी. गुस्से में कार्रवाई कर देता था. तो ही वॉज पोर्ट्रेट. मुसलमान है मुसलमान. मुल्ला है मुल्ला. मुल्ला है. मुल्ला उल्ला का मामला नहीं था. औरंगजेब इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड रूलर इन इंडिया. पागल था. He was mad. He did not get any proper guide. अब किस मुसलमान को यह डायग्राम दिखाओगे? किस हिंदू को यह डायग्राम दिखाओगे? ऐसे डाल के तुम्हारे अंदर हिला देगा. तो दिमाग सही हो. इफ योर माइंड इज इन योर हैंड,
You can create the empire like Akbar. If your mind is in your hand and you are surrounded by good people, you can create the empire like Akbar. If your mind is disturbed and you are surrounded by wrong people, no one is bad in this world, you can destroy the empire like Aurangzeb. लिख लो डायरी में आज. माइंड इंपॉर्टेंट है. खेलना तुम्हें है ना, यू हैव टू प्ले. हमारा एक दोस्त है नायक साहब, तो ही सेड टू मी वंस कि ओझा जी, यू नो Akbar used to compel Hindu women in his palace. And Akbar used to keep naked Hindu women in his palace. हमने कहा आप अकबर के जमाने में औरत रहे होंगे. कहीं कैसे? हम कहा तुमको भी खड़ा किया होगा, तभी तो याद है. कमीने, भारत में आग लगा रहे हो. एक बात बताएं, एवरी डे आई प्रे टू गॉड दैट आई शुड नॉट कम इनटू पावर. एवरी डे. अगर आ गए ना तो 20-25 करोड़ लोगों को तो ऐसे ही मार डालेंगे. मोदी जी तो बहुत अच्छे आदमी हैं. You should pray to Modi every day. It's a morning time, and still I am saying to Almighty that I should not come into power. I say that if you exist, and you bother about the people, don't bring me in power. मिनिमम 20 करोड़ तो ऐसे ही मार डालेंगे, लिटा के जमीन पे और रोलर चलवा देंगे. हाँ, ये बात नशे में कह गए हैं. वैसे मैं अहिंसावादी आदमी हूं. आई विल ऑलवेज प्रमोट नॉन वायलेंस एंड जागीरदारी. क्लियर? अभी जब व्हेन आई विल डिस्कस मनसबदारी, देन यू विल बी एबल टू कोरबोरेट. अब मनसबदारी, अब सुनो मनसबदारी सिस्टम. क्या चीज बनाई अकबर ने? एक और कांड, मनसबदारी सिस्टम बनाया अकबर ने, मिटाया औरंगजेब भाई ने, आलमगीर भाई. औरंगजेब समझ नहीं पाया, and he missed good advisors. That is why bhajan, qawwali, they are the part of spiritualism. कि once you start enjoying, तो नाचोगे. मीरा नाचती थी, गाती थी, चैतन्य नाचते थे, गाते. समझ में आ रहा ना, दिखाई पड़ रहा है. They are watching everything. बुल्ले शाह, निजामुद्दीन औलिया, इसलिए तो स्त्री को भगवान कहा सूफियों ने. हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने. अब कैसे कहें भगवान का? दिखा तो सकते नहीं. तो सूफीज एंड सेंट्स, दे हैव पोर्ट्रेड गॉड एज अ वुमन. सुनो उनको, क्या नाम है पाकिस्तानी जो सूफी है, गायक है, नुसरत. इनकी फितरत में है बेवफाई, जानती है ये सारी खुदाई. इनकी मासूमियत पे न जाना, इनके धोखे में हरगिज ना आना. लूट लेते हैं ये मुस्कुराकर, इनकी चालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए. दिस इज फॉर व्हाट? गॉड. वंस यू विल विजुअलाइज, ओहो, इनकी मासूमियत पे ना जाना, इनके धोखे में हरगिज ना आना. What was the biggest challenge for the ruler on political front? Again I will repeat,
What was the biggest challenge for a ruler of Akhand Bharat on political front? What was the biggest challenge for a ruler of Akhand Bharat, means Indian subcontinent, on political front? Regional revolts. Example: Iltutmish, Balban, Firoz Shah Tughlaq, Sher Shah Suri. Who revolted in Bengal? Awaz Khan. Who revolted in Bengal? Tughril. Who revolted in Bengal? Sikandar. Sikandar Ilyas. Who revolted in Bengal? XYZ, I don't remember the name, please go and recall it. Regional revolt. Whenever Delhi became weak, a regional revolt. Why? Why? Before Akbar, military control, only military control. Before Akbar, only military control on regional states. Civil administration was always in the hand of local people. So whenever Delhi became weak, whenever central authority became weak, these regional governors used to declare their independence. After Sultanate, you see number of small states in India. After Mauryan Empire, you see small states. Then after the decline of Mughals, again small states. This was the challenge. Civil administration in the hand of the local people. अब मजा देखो. Now enjoy. To overcome this crisis, birth of Mansabdari system. To overcome which crisis? Regional revolt. To overcome this crisis, birth of Mansabdari system. Acha. So what was Mansabdari system? Mansab means post, and a Mansabdar was a military officer come civil servant. Wow. Mansab means post, and a Mansabdar was a military officer come civil servant. Mansabdar was a military officer come civil servant. So now when Akbar occupied Bengal, civil and military, both administration was in the hand of Mughals. हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, चेहरा तेरा दिल में लिए चलते रहे अंगारों पे, तू हो कहीं सजदे किए.
right? When Akbar occupied Bengal and Gujarat, both military and civil administration came in the hand of Mughals. Both military and civil administration came in the hand of Mughals. हाल सुनकर मेरा सहमे सहमे है वो, कोई आया है जुल्फे बिखेरे हुए। मौत और जिंदगी दोनों हैरान हैं, मौत और जिंदगी दोनों हैरान है, दम निकलने ही ना पाए तो मैं क्या करूं। इस जर्रा नवाजी के लिए शुक्रिया। उर्दू तो बेहतरीन लैंग्वेज है। आज जो साहिबे मसनद हैं, आज जो साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। आज जो साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जातीय मकान थोड़ी है, और जातीय भी होता तो भी उखाड़ देते। इंसान है, भगवान थोड़ी है। इंदौरी साहब आधा कह के गए थे, आधा आधा मैंने जोड़ा उसमें। राहत इंदौरी सेड ओनली हाफ कि जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जातीय मकान थोड़ी है, और अगर जातीय भी है तो भी उखाड़ देंगे। इंसान है, भगवान थोड़ी है। और तुम आईएएस बनने के लिए परेशान हो यार, तुम लोग डिप्रेशन में हो, पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा यार, ऐसा नहीं हो रहा गाला। अगर खिलाफ है, होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं धुआं है, आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में। हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। Second point is more important. People are so much confused on that point. What is mansabdari? Clear? Second point is very important. The structure of mansabdari system. Contribution of Akbar. Jat and Sawar. Contribution of Akbar. Jat and Sawar. Jat and Sawar. Very crucial, very crucial. Jat, personal status. Sawar, number of horsemen a mansabdar has to maintain. Jat, personal status. Sawar, number of horsemen a mansabdar has to maintain. Number of horsemen a mansabdar has to maintain. Jat and Sawar.
Jat will decide salary and status, possibly introduced by Akbar in 1595. Salary and personal status. DM, CDO, CMO, all the officers of the same rank. Jat, Jat of all will be same. Means what? If it is said 5,000 Jat, 5,000 Jat, 5,000, so all will get the salary of 5,000 sawars. If one sawar is getting 5 rupees, one sawar, if one sawar salary is 5 rupees, so what will be his salary? What will be his salary? $25,000. 25,000 will be the salary of all the three people. Status is same, salary is same. Jat means salary and status. So if the Jat of a DM is 5,000, Jat of a CDO is 5,000, Jat of a CMO is 5,000, means all have the same status and same salary. How much? 25,000. अब ये बवाल क्या है सवार? Number of horsemen a mansabdar has to maintain. DM requires more sawar. His responsibility is more. So he will have 5,000 sawar. अब ये क्या है यार 50. He will have 5,000 sawar because his duty is more, his responsibility is more. CDO, less responsibility in comparison to DM. 3,000 sawar. CMO is a peaceful profession, medical officer. No sawar. So he will get 25,000 salary plus 25,000 maintenance charge. He will get 25,000 salary plus 15,000 maintenance charge. He will get 25,000 salary. No maintenance is required. Sawars are different. Because sawar will depend upon responsibility. Captain Hawkins, नाम सुना है? Captain Hawkins was given the sawar of Jat of 500.
He is a foreigner. Captain Hawkins in the court of Jahangir. As an honor, he is included in Mughal service as an honor because he is a middleman between company and Mughals. He is given an honor, 500 jat. Why to give Sawar to him? And this will save empire from what? Unnecessary expenditure. He is a foreigner, a middleman between Mughal and company. As an honor, you are including him in Mughal service. 500 jat. Why to give him 500 soldiers? So jat was salary and status. Sawar depended upon responsibility. The main agenda was to save the empire from unnecessary expenditure. Right? Jat was salary and status. Jat was salary and status. Sawar number of horsemen maintained by a mansabdar. This was introduced to save the empire from unnecessary expenditure. This was introduced to save the empire from unnecessary expenditure and to maintain official hierarchy. पदानुक्रम डायग्राम सामने समझ लो. सवार मीन्स हॉर्समैन, जात मीन्स स्टेटस. लिख लो, सवार मीन्स हॉर्समैन, जात मीन्स स्टेटस. बहुत क्रूशियल बात. If you missed it, you are gone. Pay attention. Complete concentration. DM, CDO, CMO, Hawkins, $5,000 jat, 5,000 sawar, 5,000 jat, 3,000 sawar, 5,000 jat, no sawar, 500 jat, no sawar. What is jat? Salary. What is sawar? Allowance. He is getting 25,000 salary, 25,000 allowance. He is getting 25,000 salary, 15,000 allowance. He is getting 25,000 salary. He is getting 2,500 salary. $50,000 salary at the time of Mughals. आज मत देखना. 50,000 salary at the time of Mughals. 1600 मान लो, 1600. 1600, 1700, 100 साल. 1700 to 1800, 200 साल. 1800 to 1900, 300 साल. 1900 to 2000, 400 साल. 400 साल में कितनी ग्रोथ? सो वी कंसीडर दैट 10 साल में 5% इंक्रीमेंट हुई. 10 साल में तो 100 साल में कितना?
100%। तो 500 साल में 500%। 500 करोड़। चलो 500 करोड़, 50 करोड़। Now this much salary can, listen, हम मान लेते चलो he is getting मिनिमम, मान लेते मिनिमम 50 करोड़। He is getting 50 crore salary. He is getting 50 crore salary. He is getting 45, 40 crore. He is getting 25 crore. He is getting 2.5 crore. Is it possible to give 50 crore salary in cash? See. Write a note. It's not possible to give huge amounts in cash. Then, so all those mansabdars whose salary was so huge that it cannot be paid in cash, they were given jagirs. Right? As a note, all those mansabdars for whom it was not possible to pay their salaries in cash were given jagirs. So they were mansabdars cum jagirdars. So they were mansabdars cum jagirdars. All those mansabdars whose salary was so huge which cannot be paid in cash, they were given jagirs. But Hawkins, he has to take his salary to his homeland. So he was given in kind. He was given in cash. Badauni, 50 jat, cash. Right? Rest all were given in cash. Therefore, all jagirdars were mansabdars. All jagirdars can be, don't, please, all jagirdars can be mansabdars. All jagirdars can be mansabdars. But all mansabdars were not jagirdars. All mansabdars can be jagirdars. But all jagirdars, all mansabdars can be jagirdars, but all jagirdars all jagirdars can be all jagirdars can be mansabdars, but all mansabdars were not jagirdars. All jagirdars can be mansabdars,
Right. All Jagirdars can be Mansabdars, can be, but all Mansabdars cannot be Jagirdars. अब सही, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, उठने जा रहा है, सस्पेंस इज गोइंग टू बी ओवर, बस वी आर कमिंग टू द क्लाइमेक्स। ये क्वेश्चन बहुत लोग लिख ही नहीं पाए। आई टेल यू 98% were not able to write this answer. If I say 100%, it will not be exaggeration. अभी तो अखंडानंद बाकी है, मुन्ना ही तो मरे हैं। ये पर्दा उठा दो, ये मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं। अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। तो लड़की क्या कहती है कि वो मजनू के नाना मेरे पीछे ना आना, जा प्यार करने वाले तेरी खैर नहीं। और फिर एक्टर पता क्या बोलता है, एक तो सूरत प्यारी ऊपर से गुस्से की लाली, बचना है दिल आज है कोई बिजली गिरने वाली। देखो बिजली गिरने जा रही, सुनो। एक तो सूरत प्यारी ऊपर से गुस्से की लाली, बचना है दिल आज है कोई बिजली गिरने वाली, और ये गिरने जा रही बिजली। Shahjahan suffering from financial crisis creates Jagirdari crisis. Shahjahan is suffering from financial crisis, Jagirdari crisis, increase in Khalsa land. And to overcome these two crises, सुनो, अभी बता देंगे ना, ऐसा खड़े हो जाओगे ऐसे हाथ उठा के। Shahjahan is suffering from financial crisis. Because of financial crisis, he creates Jagirdari crisis. And to overcome these two crises, he introduces a new law in Mansabdari system, the law of 1/3, 1/4, 1/5. Shahjahan introduces the law of 1/3, 1/4, 1/5 in Mansabdari system. अब ये क्या बवाल है? The law of 1/3, 1/4, 1/5. What it is given? बादशाहनामा, बादशाहनामा of Abdul Hamid Lahori. Abdul Hamid Lahori. What is this law of 1/4? Law of 1/3, 1/4, 1/5 by Shahjahan. Where? Mansabdari system. What was this? Richa is Mansabdar. Richa is from Haryana. If she gets posting in Haryana, 1/3 of her expenditure सुनना ध्यान से, 1/3 of her expenditure will be maintained by her from her salary. अरे 1/3 from my salary. If Richa will be posted in West Bengal, 1/4. If Richa will be posted in Northeast, 1/5.
If a mansabdar is in his homeland, 1/3 of his expenditure from his salary. If far away from homeland, 1/4 of his expenditure from his salary. If he is in a dangerous terrain, tough terrain, 1/5 of his expenditure from his salary. Salary. Ligo. According to this law, if a mansabdar was posted in his homeland, according to this law, if a mansabdar was posted in his homeland, 1/3 of his expenditure from his salary. One-third of his expenditure from salary. If far away from homeland, 1/4. If far away from his homeland, 1/4. If in a tough terrain, 1/5. Therefore, if Richa is having 5,000 jat and 5,000 sawar, and she is posted in Haryana, so she will get 25,000 salary, but one-third of 25,000. अब इसका खर्चा है 25,000, अलाउंस मिलना चाहिए, इसमें से -8 कर दो। 25 - 8, अब इसको अलाउंस में 17,000 मिलेगा। 8,000 हम अपने घर से दें? हाँ, हम ना देंगे 8,000। अगर इसकी पोस्टिंग अब जहां इसे 25,000 मिल रहा था, 17,000 मिलेगा। लॉ ऑफ 1/3। अगर ये वेस्ट बंगाल में है, कितना हुआ? 1/4 25,000 का कितना हुआ? 6 चौक 24, 6,000 के आसपास। $6,000 तो कितना हुआ? अब माइनस कितना हो गया? 25,000 माइनस 6,000, 19,000। If she is in northeast, one-fifth of 25,000, 5,000। Law of 1/3, 1/4, 1/5। This was called as Mansabdari crisis. तो शाहजहां created 3 crises: financial crisis, जागीरदारी crisis, and Mansabdari crisis. These 3 crises were increased by Aurangzeb. And these 3 crises were taken to its peak by Bahadur Shah I. अब जब जुल्फिकार खान अपने सिपाहियों को खुद ही सैलरी दे रहा है, तो द सोल्जर्स ऑफ जुल्फिकार खान, किंग मेकर, विल बी लॉयल टू whom? Zulfikar Khan. Sayyid brothers, if they are paying the salary to their soldiers from themselves, the soldiers will be loyal to Sayyid brothers.
और मुगल साम्राज्य इन दो पिलरों पे खड़ा हुआ था. विच टू पिलर्स? मनसबदारी, जागीरदारी. एंड द मुगल साम्राज्य collapsed because of the collapse of मनसबदारी एंड जागीरदारी. अरे राम दुहाई, कैसे चक्कर में पड़ गए हाय. मैं कितना सीधा साधा, मैं कितना भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखो से पाला, मिट्टी छुरी से. कौन लिखता वो क्वेश्चन यार? ये तीनों का नेक्सस तो समझ में आए कि तीनों हैं क्या? दोनों का नेक्सस तो समझ में आए. 99% आज जाना पढ़ लेना मनसबदारी जागीरदारी. गो एंड आस्क टू एनीवन, गो एंड आस्क टू एनीवन. इसीलिए हिस्ट्री में कम मार्क्स आते थे. दिस वाज द रीजन, दिस वाज द रीजन दैट पीपल वर नॉट गेटिंग मार्क्स इन हिस्ट्री एज ऑप्शनल. पैसा लगाओगे, सिलेक्शन के बाद अभी
Samsung fully automatic top-loading washing machine is designed for eco-fabric care. This elegantly built machine is designed